Sukesh Chandrasekhar, bawling his eyes out inside his jail cell in Delhi's Mandoli jail. Why? Because his VVIP luxury jail stash has been taken away after an elaborate raid in his jail cell. This is CCTV footage of the raids conducted on Sukesh Chandrasekhar after officials received an input that the presented by RP Sanjeev Goenka Group, Growing Legacies. Co-presented by Century Ply, आग से बचाए. Co-presented by Macho Hint, बड़े आराम से. Co-powered by See It helps. Co-powered by Sera, this is your space, play it your way. Hyundai Ioniq 5, the all-electric SUV. Clothes torn, fists, juta, chappal, all this and more in the MCD house in the national capital. A complete shambolic display by our public representatives, turning an MCD house into a wrestling ring. Who's responsible for this WrestleMania? Images from a little earlier this evening on your screen right now, where whether it's a BJP councillor or an AAP councillor, they were having a wild go for each other, swinging their arms, kicking, pushing, shoving as if this were a wrestling ring. And this has been going on now for days. When will this madness end? Who will put a stop to this violence? What's going on? Who's to blame? All that and more coming up on the Newstrack tonight. Here's a quick look at the headlines we're following on the day when the show will look more like WrestleMania than a regular debate show. Khalistani leader Amritpal and his sword-wielding supporters enter the Golden Temple. This after taking out a victory march after the release of Amritpal's aide. Lovepreet brazen provocation continues. Prime Minister Modi hits out at the Congress after Modi Teri Kabr Khudegi chants were raised in Delhi yesterday. PM says India will make the lotus bloom. वो आजकल माला जपते हैं माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी. हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा. Harassment horror in Telangana. Medical student Preeti injects herself with poison. Her family claims she was being harassed by her senior. Preeti is critical. Conman Sukesh brazens it out, says there is nothing wrong in wearing expensive clothes. Actor Akshay Kumar says he's ready to give up his Canadian passport, says he owes it all to India in an exclusive conversation on Aaj Tak's Seedhi Baat. There's complete pandemonium in the Delhi MCD house. A fresh ruckus broke out earlier this evening when AAP and BJP councillors had a go for each other, exchanging blows, slaps, tearing each other's clothes, throwing shoes, hair being pulled, resulting in utter chaos amid the councillors' physical altercation. An AAP councillor whose shirt was torn in the scuffle even seemed to have fainted inside the house. Some of these shameful images on your screen right now. The ruling party claims the House Marshal turned a blind eye to the ruckus that was allegedly spearheaded by BJP councillors. The chaos began soon after newly elected MCD Mayor Shaili Oberoi rejected the BJP's proposal to recount votes for the 6-member standing committee. The Aam Aadmi Party also claimed that Mayor Shaili Oberoi was attacked and pushed by BJP councillors. आज एमसीडी के हाउस में
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गुंडागर्दी का, अपनी लफंगई का एक और प्रमाण पूरे देश के सामने रखा है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव चल रहा था। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और उसकी वोटिंग पीसफुली हुई। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर, एक महिला मेयर पर स्टेज पर चढ़कर बुरी तरह से हमला किया। मेयर को अपनी जान बचाने के लिए शैली ओबरॉय जी, यूनिफाइड एमसीडी की दिल्ली की पहली मेयर, एक महिला, उनको अपनी जान बचाकर हाउस से भागना पड़ा। हाउस से वो बाहर गईं। हाउस के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, पुरुष पार्षदों ने उन पर फिजिकली असॉल्ट किया, उन पर फिजिकली हमला किया। ये क्या गुंडागर्दी है भारतीय जनता पार्टी की? जब चुनाव हार गए हो तो अपनी हार को मानो। काउंटिंग के समय जब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम एक वोट से हारने वाले हो, तो आपने मार पिटाई शुरू कर दी। आपने महिला मेयर पे हमला शुरू कर दिया। पुरुष काउंसलरों ने स्टेज पर जाकर दिल्ली की पहली महिला मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय पे हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी की ये गुंडागर्दी देखकर पूरा देश शर्मसार है। गुंडे इतने बेशरम लोग हैं यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर लेडीजों पे भी हमला किया है। लेडीजों पे भी हमले किया, उन्होंने मारा, उन्होंने महिलाओं पे हमला किया, मेयर पे हमला किया उन्होंने। ये आम आदमी पार्टी के हमारी झूठी फ्रॉड और धोखेबाज मेयर, जो केवल, मैं तो कहती हूँ उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने पक्षपाती ढंग से 4 घंटे आई नहीं हुए उस लेडी को, और वो इतना पक्षपात कर रही है। जब हमारे कमेटी में लिख के चले गए कि 3 हमारे जीत गए हैं, 3 उनके जीत गए हैं शांति से, उसके बाद उनको मैसेज आता है उस केजरीवाल के नीचे बैठे दुर्गेश पाठक जी वहाँ से मैसेज करते हैं, फोन चलाती रहती है, रिकॉर्डिंग्स है मेरे पार्षदों के पास। आम आदमी पार्टी अरविंद, when you're looking at those images on your screen right now, I'm sure the one question in your mind is who's beating whom, because they all look the same in the sense that they're not really recognizable faces. They all seem to be having a go at each other. Amit Bhardwaj was inside the MCD house and he hopefully can try and answer that question. So what led to this latest round of violence? What's happening inside the house right now? And when I see these images, I see lots of blows being exchanged, but I'm not quite certain who's to blame and who's beating who. well, Rahul, you know, extremely unfortunate visuals have come from the MCD house, to say the least. You know, this is mockery of democracy which happened on the floor of the house. In fact, I'm joined by Aam Aadmi Party's leader, whose wife is a councillor from Jama Masjid area, Sultana Abad. Sir, what's your name? आपका नाम क्या है? और जिस तरह की तस्वीरें आई, ये लड़ाई, ये गुंडागर्दी हाउस के अंदर क्यों काउंसलर्स ने शुरू की? बात असल ये है कि इनसे, बीजेपी से हार बर्दाश्त नहीं हो रही। आपके सामने है सारा सीन, सारा मंजर आपके सामने है। पिछले 2 महीने से आज की बात नहीं है, आपने अपनी आंखों से खुद देखा है किस तरह ये गाली गलौज कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, मेयर का कोई सम्मान नहीं, उनके बाल खींच रहे हैं। मेरी वाइफ इतनी नोबेल मेंबर ऑफ द हाउस, उसको गिरा दिया, धक्के दे दिया, चोट आई है? चोट आई है, उसके घुटने में चोट आई है, उसको चलने में परेशानी हो रही है। अभी क्या उनको मेडिकल इमरजेंसी के लिए ले गए हैं या हाउस के अंदर ही? अभी वो बैठी हैं, उनसे चलने में तकलीफ है, नीचे बैठी हैं अभी। लेकिन सवाल सर यही है ना कि अगर बीजेपी की तरफ से आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के काउंसलर्स ने ऐसा किया, आप लोगों ने भी तो इंडल्ज किया, लात घूसे चलाए हैं। आपके जो काउंसलर इस वक्त इंजर्ड हैं, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, वो विजुअल्स में रिकॉर्ड है, लोगों को लात से मारते हुए, घूसे से मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए नहीं, अपने आप को बचाते हुए। वो अपने आप को ऐसा बचाव होता है जिसमें मारना पड़ता है? नहीं, रोकना पड़ता है। अगर हमला सामने से ज्यादा होता है तो इसे रोकने के लिए अपने भी हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। किसी ने पहल नहीं की। आपके सामने सारा रिकॉर्ड है, आपके पास सारी रिकॉर्डिंग है कि आज नहीं, पिछले 4-5 बार हर बार इन्होंने शुरुआत की है। हार बर्दाश्त नहीं हो पा रही। हिंदुस्तान की तारीख में आपने किसी पार्लियामेंट में, किसी असेंबली में, किसी कॉर्पोरेशन में आज तक ऐसा नहीं लगा। 2 महीने हो गए, जनता ने अपना फैसला दे दिया। बीजेपी ने विजुअल शेयर किया है, उसमें उनकी महिला काउंसलर को चोट आया है, खून निकल रहा है। इन तस्वीरों के बारे में क्या कहेंगे? अब उनका तो आपको मालूम है, सारा ऑर्गेनाइज है, हर चीज।
चोट तो आई है ना, चोट आपके भी काउंसलर्स को आई है, उनको भी आई है? उनको भी आई है चोट, कई जख्मी पड़े हैं, जा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल चले गए, कुछ अभी नीचे बैठे हैं जिनसे चला नहीं जा रहा। Rahul, so you will hear leaders from both the parties alleging each other, saying that it was the other party councillors who started the violence. But to put it on record, what happened today was when the mayor Shelly Oberoi, decided to declare the result of the standing committee election, with saying that the single vote which has been declared invalid. After that, this entire violence started. So when Shelly Oberoi said that one vote has been declared invalid, now I'm declaring the result, that's when you had BJP councillors who were already protesting in the well. They started to show aggressive nature. They tried to reach the chair. They also, pulled down a cabin for voting, which was there. And after this, suddenly, there was Shelly Oberoi was escorted out of the house. The Aam Aadmi Party is claiming that there was threat to her safety. There was an attempt to attack her. And soon after that, within a minute, we saw visuals of Aam Aadmi Party councillors and the BJP councillors indulging in a feast fight, slaps going in the air, somebody who fell on the floor. The councillors did not stop. We saw them kicking the other party councillors like anything. It was like a battleground out there on the MCD house. And really unfortunate that not only the male councillors did this. The pictures of the women councillors were no different. They were also indulging in a feast fight, slaps being thrown at each other. We saw a kurta of several councillors. It was torn. And we'll also try to get a version from the BJP, because I can see a BJP leader is standing here. Shikha Rai, if I'm not wrong. She is here. She's from the standing committee. We'll try to get her live on India Today as well to get a version of as to what is the BJP to say on the allegations which is being put forward by the Aam Aadmi Party, because clearly the entire tussle, the hangama and the ugly scenes in the MCD started when Shelly Oberoi tried to declare the results. Now what happened is that if this particular vote which was being declared invalid by the mayor, if that would have happened, there was a high possibility that BJP would have lost out its third member in the standing committee. And Aam Aadmi Party is saying that all this was happening because... Amit, Vijender Gupta of the BJP, one of the prominent leaders in Delhi, is addressing the media right now. Let's listen in. अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से मारपीट 10 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को चोट आई है, जिनकी पुलिस रिपोर्ट की गई है, जिनका मेडिकल हो रहा है, और जिस तरह से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए उसको बदलने की कोशिश की गई, ऐसा दिल्ली के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये जो कुछ हो रहा है गुंडागर्दी, ये दिल्ली में इससे पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में थी ही नहीं। इनकी जो अराजकता है वो स्टैंडिंग कमेटी की जो फॉर्मेशन है उसको प्रभावित कर रही है। इस चुनाव में 6 सदस्यों को चुना जाना था स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में, जिसमें 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुने गए और 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के चुने गए। 1 सदस्य आम आदमी पार्टी का चुनाव हार गया, उसको जिताने के लिए ये पूरी कवायद की गई और परिणामों के साथ टैंपरिंग की गई। हम मांग करते हैं इस पूरे मामले पर इसकी तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने परिणामों को प्रभावित करने के लिए टैंपरिंग की है, और जो एक प्रकार से जो चुनावों का जो परिणाम था प्रेफरेंशियल वोटिंग का, उसको तोड़ मरोड़ कर महापौर ने कोशिश की कि जो लोग हारे हैं उनको जीता हुआ घोषित किया जाए। इस तरह का जो ये व्यवहार है आम आदमी पार्टी का, ये निश्चित रूप से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि गुंडागर्दी जिस तरह बढ़ रही है उससे दिल्ली के प्रशासन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि अभी दिल्ली नगर निगम में महापौर का चुनाव हुआ बहुत शांति से हो गया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी
स्टैंडिंग कमेटी में आने वाले समय में उस बहुमत के आधार पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बना सकती है, इस तरह का आभास साफ रूप से देखा जा रहा है। उसको प्रभावित करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी का गठन ही ना हो, या उसमें जो हारे हुए लोग हैं उनको जीता हुआ घोषित करके और उनको सदस्य बनाया जाए, इस तरह का दुस्साहस आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है। जनता के साथ जो जिस तरह का दुर्व्यवहार आम आदमी पार्टी कर रही है, ये बर्दाश्त के बाहर है। आज सदन में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अराजक है। Back to the MCD house where Shikha Rai, who was leading the MCD councillors from the BJP, is currently live with us with my colleague Amit Bhardwaj. Amit, take it away. The dictatorship of the mayor is responsible for all this that is happening. Ma'am, Rahul, Shikha Rai is joining us. She is the one who was handling the affairs of the BJP councillors on the floor of the house. Ma'am, first a direct question. Delhiites didn't want to see these visuals coming from the MCD. 2 crore people of Delhi has been actually, they must be feeling ashamed that they have elected councillors like this to the house. Definitely, it's not a scene which should be watched by anyone, and it is not the place where all these things should happen, because whatever happened is very unfortunate. But I think mainly the mayor's attitude, the behavior, the illegal, unconstitutional decisions that she was making, that this led to all this, The last 3 days, I think everybody is witnessing. What was the reason? Just direct question. Let me ask you a direct question. We saw when the mayor was constantly saying that this particular vote has been declared invalid. You people were protesting in the well. That keeps on happening in the house. But after that, when she tried to declare the result, that's when we saw BJP councillors approaching the pink cabin which was kept for voting. It was tumbled down, and then you tried to reach the chair. And suddenly everything turned into a chaos. Aam Aadmi Party councillors jumping into the well as well, and the fuse fight started. What was the need of this violent, aggressive protest? See, we were regularly asking her, we were telling her that this is not fair. You cannot declare a vote invalid like this. There should be a procedure to it. Please adopt the procedure. Please do everything in writing. You cannot verbally ask the MS and everyone to come for recounting and all. This we would what is the justification for aggressive behavior? That's what we are saying. We all, when we saw that she's going to declare the result, we all moved forward to ask her, please don't do this. And then, all the AAP councillors, they were already on their, we did see BJP councillors tumbling down those cabins and then chaos unfolding in the house. I just want to understand as to what was the need of this aggressive behavior on the house. It was only to reach to her to say that please don't do this, don't declare the elections which are already declared. We were trying to reach to her, and of course, naturally, when you are trying to go in front of her to tell her something, you have to be little pushy, and because all the forces are standing there. We were just doing that, and in the meantime, all the Aam Aadmi Party corporators and whosoever, I don't know, I couldn't even see as to what has happened. All we do understand that councillors from both parties have sustained injuries, but now Aam Aadmi Party is claiming that the first women mayor of the unified MCD, there has been 2 attempts to attack her. Right. See, this is the allegations. They are allegation party. I do not go into that. I am just asking, aren't there any other measures to reconcile, to talk on the issues? Wasn't her responsibility that she should have called one of us, 2 of us, or 2 of his own party people, and then we would have we would have talked, we would have told our story. She never did that. She kept on sitting there and saying that no, I am declaring this. And is this democracy? And why did the marshals stand witness to all this? Mute spectators. We didn't see them doing much besides escorting the mayor out to safety. I think that's their job, that they have to do it to take the mayor first out. That's the first. So Rahul, you just heard Shikha Rai explaining that it is all because Shelley Oberoi didn't listen to the
pleas of of the BJP. You know, there's a back and forth that's going on between the BJP and the AAP, both blaming each other. This has now been going on for many days. It's not just happened this evening. It's been going on since at least the 6th of January, when AAP and BJP councillors came to blows for the first time. Then on the 24th of January, the same thing happened. Then the 22nd of February, the 23rd of February, and now. So basically, you've got a situation where AAP and BJP councillors are coming to blows day after day. And the worst part is that no one seems to know when this will end. And it's clear, like for example, I've got this one video put out by the BJP where they're claiming Atishi Marlena of the AAP actually instigated AAP leaders, the women councillors, to go out and start beating the BJP. So you got these charges being flung across on both sides. There she is speaking to her councillors, according to the BJP, instigating them. खड़े देख रहे हैं जो ये दावा करते थे कि हम झगड़ा रुकवाएंगे, उन्होंने देखो अभी से समझाया है और यहाँ के झगड़ा कर रही है। अभी देखो आतिशी ने समझाया है, अभी आतिशी के समझाने पर ये झगड़ा कर रही है। देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है। देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है। देखो साहब ये देखो आतिशी के समझाने पर झगड़ा करने के लिए। Charu Pragya of the BJP is with us. Anika Mehrotra of the Congress is with us. The AAP has decided at this moment they're not joining. But I want to go across to Anika because I know what the BJP will say. I know what the Congress, what the AAP will say. I am wondering who you think is to blame. Because you're the third party, a marginal force in the MCD house at this moment. You're looking at it from the outside. Who do you think is to blame? Rahul ji, both BJP and AAP should learn to practice what they preach. And you lead by example. And rightly so. The example led by both the parties, the Aam Aadmi, is of anarchist form. And BJP, you know, they feel that they are supremo and they have yet to digest the fact that they have lost the MCD election. I have also been a member of the House. Rahul ji, have never ever seen such unruly, unethical, unconstitutional behavior. There have been issues, Rahul ji, and it has been amicably resolved with consensus. But never ever have we, barged in or, bashed up each other. It's disgraceful. I feel the people of Delhi are being duped and they're being cheated on what they thought would have been a good governance. One was talking about the Kude Ka Pahar, the other was on cleaning of Jamuna and so on. Where are the issues now? So they need to resolve. Unfortunately, they're almost at par, barring a few seats here and there. So I think they should resolve the issue, get working. But today, not only today's behavior, Rahul ji, it has been, as you rightly said, following it for weeks. The delay in the election, the delay of, adding in the cooperation. Just stay with me for a moment. Arvind Kejriwal is doing a press conference at this moment. He happens to be in Delhi. He's flanked by Uddhav Thackeray of the Thackeray Sena, Uddhav Sena. Let's listen to what they're saying. अलग बताने की आवश्यकता नहीं है. बहुत दिनों से हम मिलना चाहते थे और बीच में मैंने जैसे कहा कि पूरे देश में से जो प्रमुख नेतागण हैं वो संपर्क करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं. मेरी बात हो रही है और अपने देश को अधिक मजबूत बनाने के लिए हम मिलकर क्या कर सकते हैं, यही हमारे बीच में एक जो विचारधारा कहते हैं वही विचारधारा है कि देश को अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए. खैर, मैं तो हमेशा आपके साथ बातें करते रहता हूं, आगे भी करूंगा, लेकिन मैं अरविंद जी को कहूंगा, विनती करता हूं कि अरविंद जी आप आए हो, आप बताएं. सब लोगों को मेरा नमस्कार. सबसे पहले मैं उद्धव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने मुझे, भगवंत मान साहब को, संजय सिंह को, राघव चड्ढा जी को, हम लोगों को अपने निवास स्थान पे चाय पे आमंत्रित किया और उनके साथ काफ़ी विषयों के ऊपर चर्चा हुई. उद्धव जी से मिलने का मेरा बहुत दिनों से मन था. खासकर कोरोना के दिनों में मुझे याद है कि जब कोरोना पीक पे था उस वक्त हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे थे और जिस तरह से उद्धव जी ने और उनकी सरकार ने बॉम्बे में और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना को कंट्रोल किया वो बहुत काबिले तारीफ था. और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हम दिल्ली के लोगों ने बॉम्बे से और महाराष्ट्र से बहुत कुछ सीखा
इनकी कई सारी प्रैक्टिसेस होती थी जो कि बहुत अच्छी थी, जिनको हम दिल्ली में अपनाते थे, दिल्ली में हम उसको लागू करते थे। सो बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी इनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलने की, और आज मुझे व्यक्तिगत तौर पे इनसे मिलने का, पूरे परिवार आदित्य जी से मिलने का, पूरे परिवार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा भी की। आज देश के जो हालात हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। आज देश का युवा जो है वो बेरोजगारी से बुरी तरह से त्रस्त है। पढ़ लिख के लोगों को, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। बड़े बड़े उनसे वादे किए गए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 4 करोड़ नौकरी देंगे, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि लोगों को अपना आमदनी बढ़ नहीं रही है और लोगों का खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, चीजें महंगी होती जा रही हैं। जिस तरह से मौजूदा केंद्र सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक तरह से पूरे देश को गिरवी रख रही हैं, सारे देश के संस्थानों को बेचती जा रही हैं। अब एक बहुत बड़ा आज सुनने में आया कि LIC जो है वो LIC भी अब धीरे धीरे घाटे में जाने लगेगा। करोड़ों करोड़ों लोग, जिन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी LIC के अंदर जमा कराई थी, उन लोगों का क्या होगा। इन कई सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई, देश के गंभीर हालात के ऊपर चर्चा हुई। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे से सीखेंगे। हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे से सीखना है। इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं देश के अंदर है, पर यह है कि हम आपस में मिलते नहीं हैं, आपस में चर्चा नहीं करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा है कि उद्धव जी से आज चर्चा हुई बहुत, और हम इसको अब आगे मिलते रहेंगे और इस रिश्ते को और आगे लेके जाएंगे। मैं मान साहब से निवेदन करूंगा वो भी 2 शब्द आवाज आएगी। आज उद्धव जी से मिलने का मौका मिला, पूरे परिवार में बैठने का मौका मिला। पंजाब और महाराष्ट्र का बहुत गहरा नाता है। आज़ादी के संग्राम में भगत सिंह पंजाब से थे तो राजगुरु ऊना से थे, तो वो इकट्ठे देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो वीर सूरमाओं की भूमि है महाराष्ट्र, और पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, चंद्रशेखर आजाद यूपी से, तो सब इकट्ठे होकर देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनको कदाचित ये चिंता नहीं थी कि आज़ादी आएगी या ना, उनको चिंता ये थी कि आज़ादी के बाद देश कौन से हाथ में जाएगा। तो इस देश की आज़ादी बहुत महंगी मिली है, वो भीख में नहीं मिली। बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे जो पुरखे हैं, हमारे बुजुर्गों ने दी हैं, तो उस आज़ादी को कायम रखना भी हमारा फर्ज बनता है। वो तो अपनी कुर्बानियाँ देकर चले गए, हम उस आज़ादी को कायम रखने के लिए भी, पंजाब हमेशा, हम बॉर्डर स्टेट हैं, हमारे जवान जो है सीना तान के खड़े हैं। तो देश कैसे आगे बढ़े, इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनाया जाए, सोने की चिड़िया जो देश को कहा जाता था, उस चिड़िया के पंख किसने नोचे, और उस चिड़िया का जो पूरा, मैं कहता हूँ, एक एक पंख नोच कर कौन खा गया, और कौन जो है वो इस देश में से लोग भाग रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े करोड़पतियों के नाम भी आ रहे हैं कि वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। तो हमारा देश हर किस्म का मौसम है, हमारे पास मारूथल है, हमारे पास दरिया है, समुंदर है, कोल है, तेल है। बस सच्ची नीयत वाले लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो इस देश जैसा धरती पे कोई देश नहीं है। तो पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का जो कल्याण कैसे हो, हर घर के चूल्हे को जो है वो आटा मिले, हर घर में आग जले चूल्हे में, रोजगार मिले और तरक्की हो, तंदुरुस्ती हो, इन मुद्दों पे बात हुई और अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एक बार फिर उद्धव जी का और उनकी फैमिली का कि उन्होंने हमें यहाँ बुला के मान सम्मान किया। आप आते रहिए। बीएमसी चुनाव को लेकर कुछ बात हुई है क्या? आपकी पार्टी भी काफी तैयारी कर रही है बीएमसी चुनाव लड़ने की, इसके बीच में कुछ बात हुई है? इस देश में एक पार्टी है जो 24 घंटे चुनाव की सोचती है। हम 24 घंटे चुनाव की नहीं सोचते, हम देश की सोचते हैं। हमारे सामने देश है, हमारे सामने इस देश के बेरोजगार युवा हैं, हमारे सामने किसान हैं,
हमारे सामने वो गृहिणी है जिसका पति हर महीने पैसे ला के देता है और उसका खर्चा नहीं चलता। 20 तारीख के बाद उसको पता नहीं अगले 10 दिन कैसे बीतेंगे। उन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। जब चुनाव आएंगे चुनाव की भी चर्चा करेंगे। पार्टी हैं, हम चुनाव तो लड़ेंगे, उस टाइम चुनाव की भी चर्चा करेंगे, पर हम उस पार्टी की तरह 24 घंटे चुनाव की बात नहीं करते। इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम घटा, उद्धव जी की पार्टी की चोरी हो गई, उनका सिंबल चोरी हो गया, उनका नाम चोरी हो गया, उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए। पर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र इनके साथ है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से इनको न्याय भी मिलेगा। और मेरा अपना मानना है कि ये सारे आने वाले चुनाव जो हैं वो स्वीप करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे को। तो सर आप क्या सोच रहे हैं कि आने वाले समय में अगर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं तो उद्धव जी के साथ आप अलायंस करेंगे, वो क्या सोच? जब चुनाव आएगा आपको सारी बातें बताएंगे। आज बहुत वॉयलेंस देखने को मिला है फिर से और कई फायर भी हो गया, इस तरीके की खबर है स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन में। मैं क्या बताऊं, ये तो आप उनसे पूछिए। गुंडागर्दी के सिवा उनको कुछ काम नहीं आता। अगर वो इतना देश की जिम्मेदारी उन लोगों को दी हुई है, अगर वो देश के बारे में सोचें तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। चारों तरफ गुंडागर्दी, चारों तरफ ये, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। हम आपस में क्यों लड़ते हैं? हम आपस में इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई जब दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी, 104 सीट उनको दी, तो मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए। 2.5 महीने से मेयर ही नहीं बनाया, डिप्टी मेयर तो हमारा बनना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए, बना ही नहीं रहे, रोज लड़ते हैं। बताओ, मेयर का चुनाव कराने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये तो दुख की बात है। अरविंद जी, एक सवाल ये था कि विपक्ष के नेता लगातार आरोप कर रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली का सिनेरियो, महाराष्ट्र का सिनेरियो, इस विषय पे आपकी उद्धव जी से कुछ गंभीरता से डिस्कशन हुआ है? देखिए, कायर लोग इस्तेमाल करते हैं। ईडी और सीबीआई और ये सारी एजेंसीज का इस्तेमाल कौन करता है? कायर लोग करते हैं। करने दीजिए उनको। उन्हें हमसे डर लगता है तभी तो करते हैं। आपके घर ईडी नहीं आई, आपके घर सीबीआई नहीं आई, इनके घर आती है, मेरे घर आती है। परसों ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता देख रही है। अंत पंत में सच्चाई की जीत होती है, झूठ झूठ होता है, सच्चाई की जीत होती है। भगवत मान जी, आपसे सवाल है, जिस प्रकार से पंजाब में हिंसा हुई है, अजनाला पुलिस स्टेशन को जो है वो आक्रामक कर लिया गया, उसके बाद वहां पर पुलिस वालों को भी पीटा गया, एक एफआईआर ने रजिस्टर हुई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप लोगों के पास यहाँ गलत सूचनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में कंट्रोल में है, पंजाब पुलिस सक्षम है और पंजाब का जो सोशल बॉन्डिंग है उस पर गोलियां भी चली 10 साल, बम भी फूटे, लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में, वो लोग मिलकर रहना पसंद करते हैं। अमन शांति वाला हमारा स्टेट है और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अब वहाँ पे इन्वेस्ट करने लगी हैं, क्योंकि पहले किसी खास फैमिली के साथ एमओयू होता था, अब पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ जो है वो एमओयू हो रहा है। पंजाब को नंबर 1 स्टेट हम बनाने में अपनी तरफ से हमारी गारंटी थी। जब अरविंद जी और हम सारी टीम चुनाव प्रचार कर रहे थे तब हम गारंटियां दे रहे थे, बिजली बुक की गारंटी, कच्चे मुलाजिम को पक्के करने की गारंटी, रोजगार की गारंटी। तो मैं तो मतलब यही कहूँगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको न। The Delhi Chief Minister accusing the BJP of not allowing the AAP to form the standing committee in the MCD house. But very, very ugly scenes here. Ugly scenes also seen in Punjab at the Golden Temple in Amritsar, where you've got Amritpal, the so-called Khalistani leader, and his sword-wielding supporters who entered the Harmandir Sahib after taking out a victory march after the release of Amritpal's aide Lovepreet. Details coming up on the other side of a quick break.
Over 3 decades, Business Today has delivered news, views and analysis like no other, chronicling India Inc.'s journey through time. Now, at 31 years, Business Today presents the future. Mission 2047, Road to India at 100. With Indian industry's biggest stalwarts and an exclusive interview with Google CEO Sundar Pichai. This is a decision which has to be taken by the Bhagwant Mann government, and obviously there have been several questions because remember things have been simmering for quite some time and there have been statements being made, and well, let's just go try and get to Punjab Warisdi chief and let's just ask some tough questions to him. आप दुबई से आए हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इंग्लिश में आप अगर बात कर सकते हैं. काफी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कहीं चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को, क्या इरादा है, क्या मंशा है? जिस तरह से आज भी कन्फ्रंटेशन हुआ है जहां पे हमने देखा है कि पुलिस के साथ है, समर्थक हैं आपके, वो भिड़े हैं, तो लोग अब जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, क्या विचार है? You want me to speak in English? हाँ, please if you can. See, I didn't threat Amrit Shah or Modi. Media kindly misquoted it. Amit Shah said he will crush the Khalistan movement in an interview. When you want to crush or suppress a peaceful movement, that's totally allowed in democracy, like a Hindu Rashtra movement, like the socialist movement or any other movement. When a home minister says he will crush something, it's not a kind of home minister says something. I just refer to the history. I said Indira Gandhi did the same mistake. It's not just about she got killed after that. It's not about her murder. It's all about what happened after that. After attacking Darbar Sahib, there is a 10 years long militancy period in Punjab. Thousands of Sikh got killed in Delhi genocide. So it's not about threatening Amit Shah. He is threatening Sikh community. He is threatening the entire community who are aspiration of Raj. But are you not propagating a separate state? Are you not talking about... I am. And what is not a crime? If I'm trying to do it in a peaceful manner, how it is a crime? You're talking about a separate state within India. Kamal. See, within a democracy, self-determination is not a crime. There is a question coming in from Delhi. Let me ask you that question. Yes, Gaurav. Kamal, the Khalsa Raj of Maharaja Ranjit Singh Ji, the capital was in Lahore. Why don't these people claim Khalistan in Lahore? So the question coming in from the studio is that the Khalsa Panth and during Maharaja Ranjit Singh was in Lahore. So why not have a movement there? I mean, why are you propagating it here? See, in 1947, we chose to be here, in this part of the country. They divided Punjab, the British divided Punjab by the policy because Punjab was the strongest country in that time. They had to conquer it after 3 attempts. So what happened? When you say go to Pakistan, do it. We came here. We accepted ourselves as Indian citizens. You're on board the Newstrack. The situation in Punjab is quite alarming. Pro-Khalistan leader of the Waris Punjab, Amritpal Singh, ensured that his supporter Lovepreet Toofan was released from custody after a mob with swords and guns attacked the Ajnala police station. Today, Amritpal led a victory march till the Golden Temple. He continues to brazen things out, demanding a separate Khalistani state. All the while, the Punjab police seems to be indulging him and looking the other way. He led a violent spectacle. Carried Shri Guru Granth Sahib in a bus during the showdown. That's how Khalistani ideologue Amritpal Singh
took the state police off guard when he mobilized thousands of his supporters to storm a police station in Amritsar district. The Bhagwant Mann government buckled under pressure. The Punjab police on Friday released Khalistani leader Amritpal Singh's close aide Lovepreet Toofan. ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੰਗਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ It's a tremendous loss of face for the police force. The release followed open threats by Amritpal Singh. Amritpal had even set a deadline. Flout it and you will have to deal with the consequences, he had declared. ਇੰਨੀ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ The Punjab administration has come under opposition fire for its handling of Amritpal Singh. The BJP accused Punjab's AAP government of fanning communalism to bring the entire Sikh community under disrepute. ये अरविंद केजरीवाल जो कि रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चला रहे हैं ये उनकी खुद की एक डिज़ाइन की हुई जो 1980 के दशक में कांग्रेस की एक डिज़ाइंड कॉन्स्पिरेसी थी एक मोडस ऑपरेंडाई थी कि पंजाब के पहले जो भावनाएं उनको उत्तेजित करो फिर उन लोगों को खुला छोड़ो फिर मारपीट करके उनको जेलों में बंद करो और फिर देश को ये संदेश दो कि हमने पंजाब में आतंकवाद खत्म किया है हमें वोटें डालो Former Punjab Chief Minister Amrinder Singh questioned Amritpal Singh's motive behind taking Guru Granth Sahib to the protest site. In a statement, he termed it collapse of law and order in Punjab and warned Pakistan could exploit a situation like this. एक FIR हुई उसके एवज में ये लोग इधर आए दे हैव गिवन सम प्रूफ्स आल्सो सो अब इनसे बातचीत हुई है एंड एसेट इज फॉर्म्ड एंड the person who was arrested they have given enough proofs that he is innocent so the sit is taking cognizance of that thing and ultimately जो ये लोग अब peacefully disperse हो जाएंगे and law will take its own course. The violent protest may have eased for now, but not the political fire over it in Punjab. Bureau Report, India Today. So who is this Amritpal Singh? From a boy with a fancy haircut in Dubai to a Khalsa proper in Amritsar in a matter of months, his rise has been rather intriguing. He seems to be the new age Khalistani for whom even the basic tenets of Sikhism do not seem to be a must. Amritpal then, without a turban and with a fancy haircut in Dubai. Amritpal now, an initiated Sikh embracing a flowing beard and other key articles of the faith. The 30-year-old's arrival in the Sikh religious political sphere last year has been lightning fast. Amritpal Singh has made no secret of his support to the idea of a separate Sikh homeland. So did the late actor Deep Sidhu, his predecessor at the Waris Punjab Day organization, or the US-based Gurpatwant Singh Pannu of the outlawed Sikhs for Justice organization. But before Amritpal Singh participated in the sacred ceremony, he shared something else with the two: the looks of non-Sikhs, intriguingly espousing the Khalistani campaign. Nevertheless, Amritpal Singh's swift makeover, like slain militant leader Jarnail Singh Bhindrawale, his anointment as Deep Sidhu's successor at his Waris Punjab Day group, his traditional robes, his oratory peppered with typical religious jargon, and the armed men flanking him
on his whirlwind tour of Punjab over the past 4 months made him popular full tilt. पर मैं एक गल कहना जे साडे 4 गिनती दे 5 दे बंदे हैं जे आप च लड़के मारना दे एक मैदान चुन लो ते एको दिन सापा निबेड़ दिए सारा. A Sandhu Jat by birth, Amritpal Singh got one more cause to rally around. Ongoing protests in Punjab backed by the mainstream Akalis for the release of Sikh men convicted under tough anti-terror laws during the unrest in Punjab from the 1980s and 90s. But when watched with attention to detail, Amritpal Singh could be seen switching from one goal post to another or holding several of them at once. Avaris Punjab da, the inheritor of a diverse Punjab, a crusader against conversions, a crusader against drugs, a Robin Hood attending to people's grievances in villages, and, of course, a champion of the idea of Sikh freedom. A proponent of a separate Sikh nation, Amritpal Singh also abruptly turned inward, targeting chairs and benches placed in gurdwaras for the elderly and the infirm in Punjab. He drew heavy criticism from Sikh intellectual circles after his men set the gurdwara furniture on fire in December. The act considered antithetical to the whole concept of Sikh Seva. And in yet another rare move by any Khalistani ideologue ever, Amritpal Singh carried the Guru Granth Sahib in a bus as his supporters prepared for a showdown on Wednesday with the police over the arrest of an aide. A man with no hardcore religious background, pictured in a vintage Sikh costume at his tightly guarded wedding earlier this month. Adept at appropriating Sikh imagery and even the most sacred of the faith's practices at will. Amritpal Singh's quick rise leaves some perplexing questions regarding the causes he claims to be championing unanswered. With Harmeet Shah Singh in Delhi, Bureau Report, India Today. This is where I wrap up the Newstrack tonight. For your time and your trust, thank you very much. I look forward to seeing you at 8 p.m. tomorrow evening. Till then, from all of us here, goodbye, good night. It is not often that you see a political dharna on the tarmac of an international airport. The Indigo flight 6E204 to Raipur was ready for takeoff from Terminal 1 of the Indira Gandhi International Airport on Thursday, when one of the passengers was told to get off the plane. Congress leader Pawan Kheda, who was flying to Chhattisgarh to attend the plenary session, was unceremoniously deplaned. मुझे कहा कि आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है नहीं, हैंड बैग है, बोले नहीं एक बार आप आइए। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे, मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। Kheda's party colleagues who were travelling on the same plane soon joined him on the tarmac. As it became clear, the Congress spokesperson was being arrested for a comment he made against Prime Minister Narendra Modi. पवन खेड़ा का कसूर क्या है? उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में केवल और केवल नाम लिया था। हम ये इस सच्चाई से लड़ेंगे, हम सच्चाई के सिपाही हैं। आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहाँ पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। The arrest was on the basis of an FIR by Assam police registered in Dima Hasao district. The case against Kheda is over a jibe he made linking Prime Minister Narendra Modi and industrialist Gautam Adani, which he later claimed was a slip of tongue.
जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी. While Kheda made the remark against Prime Minister Modi on Friday, the BJP raised it in a big way this week, calling it a personal attack and an insult. कितने ही अपशब्द क्यों ना कहें, अमर्यादित भाषा क्यों ना बोलें, ये अपना ही गड्ढा खोदने जैसा है जिसमें कांग्रेस पार्टी खुद गिरेगी. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Wali painting, a mural art form of Maharashtra, gives Aurangabad a facelift ahead of a G20 inception meeting. A group of 120 women painted non-stop for 6 hours to complete the artwork. वुमेन एम्पावरमेंट शो करते हुए हम लोग ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वारली का, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वारली पेंटिंग जो है, जिसका रिकॉर्ड पहले पूना में था, उसको पूना के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए, उसको चैलेंज करते हुए आज हम सब लड़कियां, वी आर 120 लेडीज हियर वर्किंग फॉर दिस वारली पेंटिंग टुडे. और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो है नंदिनी घोडेले. ये कॉन्सेप्ट जो जहाँ से आई है, वो लड़की ने सर 21 इयर्स की लड़की है. दिस इज रियली अ मोटिवेशन टू ऑल द गर्ल्स ओवर हियर. The work spread over 3,200 square feet will enter the India Book of Records 2024 in the social and cultural category. This painting breaks the earlier record of 3,050 square feet set by artists in Pune. I congratulate all the dignitaries, those who have taken efforts, जिन्होंने इस इवेंट को एक सक्सेसफुल बनाया है, and congratulations to Aurangabad Municipal Corporation. There were no professional artists among the 120 participants. They came from different professions like medicine, accountancy, and engineering. Bureau Report, India Today. Leo.
Thalapathy Vijay is one of the most celebrated actors of Tamil cinema, and every time he returns on the big screen, it's no less than a carnival. Leo will also feature Sanjay Dutt, who is all set to make his Tamil debut. Trisha will also be playing a crucial role in the film. And with this, the actress and Thalapathy Vijay will collaborate after 14 years. அதான் பார்த்தனே சார் பயங்கர ரொமான்டிக் மூட்ல இருந்தீங்க. சாரி அஞ்சலி. எதுக்கு? இல்ல நேத்து நீ வீட்டுக்கு வந்திருந்தப்போ நான் மாதிரி பேசிர கூடாதுல. சச்சா அந்த இடத்துல நான் இருந்திருந்தாலும் அப்படிதான் பேசிருப்பேன். Leo will also mark yet another collaboration between Thalapathy Vijay and filmmaker Lokesh Kanagaraj. Their first being Master. The action thriller will release in October. Mega star Kamal Hassan will also treat fans with his next offering, Indian 2. Directed by Shankar, the film is a sequel to the much celebrated film of the same name. Cine lovers are waiting with bated breaths to witness Kamal Hassan in the khaki costume, essaying the role of vigilante Senapati. Surya 42. Next in line is Surya with his tentatively titled film Surya 42. Directed by Sirudai Siva, touted as historical fantasy drama, the film will also star Disha Patni in lead role. As per reports, Surya 42 has a 1,000-year-old backstory with some solid action. The superstar was last seen in Edarkum Tunindavan in a full-fledged role. Directed by Pandiraj, the action drama received mixed response at the box office. He also appeared in cameo role in Vikram and Rocketry, The Nambi Effect. Of journalism, I haven't quite seen a political rally like this. आए हॉट पकड़ा अरे वाह भांग का लड्डू बॉस छोले and momo. Which way are the winds blowing across the gentle hills of Shillong? देना साथ मेरा. अरे किसका साथ दोगे बॉस? देखेंगे जब टाइम आएगा. क्यों इतने जल्दी में हो? Trinamool is only going to states which are BJP and NDA ruled and dominated. We didn't break the Congress. Who is breaking the Congress? Personally alone, I'm ready to sit anywhere but not to work with NPP. I've told this. Are you going to play kingmaker or do you want to be king? Well, we would like to be king, not a kingmaker. Yes! Rajdeep Ronaldo. You have enough jobs for young people? Not enough job for all of us young people. क्या होगा इलेक्शन में? इलेक्शन में बीजेपी जीतेगा. It's going to be a khichdi. It's going to be a nice khichdi. Just want clean politics and clean governance. This is the journalist breakfast. This is a journalist breakfast? Really? Será. What will be, will be. And welcome to Elections on My Plate, coming to you from Shillong in the beautiful state of Meghalaya.
Unfortunately, Meghalaya's politics has not always matched its natural beauty. The state hasn't thrown a single party majority government since 1972. As a result, political defections and post-poll dealings and alliances have been the order of the day. Will 2023 be any different? A slew of parties are competing for a small 60-member assembly. The ruling National People's Party, the Trinamool Congress, the BJP and local parties all in a fierce race for power. Which way are the winds blowing across the gentle hills of Shillong? Join me on Elections on My Plate.